Yes, welcome to our YouTube channel 24 by 7 AP Library. In this live class, we are going to discuss about devices which are used in some poems in class 6th. Literary devices. In this live class, we will cover these two poems, Bharatesh and Audrey, which are in second term 6th class. Let's start with literary devices. The very first is simile. Simile is a direct comparison between using the comparison words like or as. तो जो सिमले है, सिमले लिटरेरी डिवाइस है, वो डायरेक्ट कंपैरिजन है टू थिंग्स में. कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, कोई भी, उनमें डायरेक्ट कंपैरिजन है. एंड वी यूज लाइक और एज वर्ड्स फॉर दिस कंपैरिजन इन सिमले. लाइक वर्ड यूज करते हैं या फिर एज वर्ड यूज करते हैं. Here we have example from the poem Audrey. Years drift by, fall like leaves. This is an example from Audrey poem. Years drift by. यहाँ पे years और leaves दोनों में comparison है. We are showing same quality. We are doing comparison between these two, years and leaves, and using the word like. In simile we use like or as word, and here we have like word, and comparison is there between years and leaves. Comparison यहाँ पे है years और leaves में, और हमने यहाँ पे comparison word use किया जो वो है like. So this is simile. Next is metaphor. Metaphor is an empty comparison without the use of comparison words like or as. तो मेटाफोर भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है और सिमिले भी कंपैरिजन के लिए यूज होता है. बट देयर इज वन डिफरेंस. इन सिमिले वी यूज कंपैरिजन वर्ड्स लाइक और एज, बट इन मेटाफोर we don't use these words. We don't use like or as words in metaphor. So this is indirect comparison. Indirect comparison between two things same, but without the use of like or as. Like here we have example from the poem Our tree, long branches stretch the arms. तो long branches यहाँ पे और arms दोनों में comparison है, but without the use of like or as. ना तो यहाँ पे like word use हुआ है, ना ही as word use हुआ है, but that's why
Metaphor literary device is used in this line to show comparison between these two things, long branches and arms. Another example we have from the poem Bharat Desh. In Bharat Desh, we shall set up schools, all sacred temples for us. Here we have comparison between schools and temples, and without the use of like or as, without the use of any comparison word. So here this is metaphor. We shall set up schools, all sacred temples for us. So this is metaphor because here we have done comparison and without the use of like or as. तो यहाँ पे schools और temples में comparison तो है but like और as word use नहीं हुए. And be clear about the difference between simile and metaphor. Comparison is there in both. The difference is in simile we use like or as words, comparison words, but in metaphor we don't use these words like or as. Next one is alliteration. Alliteration is the occurrence of the same sound at the beginning of adjacent or closely connected words is called alliteration. तो जहाँ पे बिगनिंग पे हर एक किस वर्ड्स के बिगनिंग पे स्टार्टिंग पे सेम साउंड यूज होता है, सेम साउंड आता है एक ही लाइन में, दैट इज alliteration. And that can be in adjacent. Adjacent means continue words one after the other. एक के बाद एक वर्ड में अगर वहां पे सेम साउंड यूज हुआ है दैट इज एलिट्रेशन. और अगर क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स मींस अगर उन दो वर्ड्स में जहां पे सेम साउंड यूज हुआ है स्टार्टिंग पे, जिन वर्ड्स के स्टार्टिंग पे, तो वो भी एलिट्रेशन ही है. जहां पे उसके बीच एक दो वर्ड्स आ गए, एक्स्ट्रा आ गए, तो वहां पे भी एलिट्रेशन ही होगा. बट द वर्ड्स शुड बी इन सेम लाइन. तो सेम साउंड, repetition of same sound is called alliteration. The use of alliteration gives a musical effect to the poem. जब सेम साउंड यूज होता है इससे म्यूजिकल इफेक्ट दिया जाता है पोएम को. म्यूजिकल इफेक्ट देने की कोशिश होती है पोएट की ताकि वो म्यूजिकल इफेक्ट पोएम में ऐड कर सके, दे सके. और जो एलिट्रेशन है वो सिर्फ एक साउंड की रेपिटेशन है, दैट इज नॉट रेपिटेशन ऑफ लेटर्स. साउंड की रेपिटेशन होनी चाहिए. कई बार सेम लेटर डिफरेंट साउंड्स भी प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट साउंड्स भी यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन में सेम लेटर के, बट दिस इज द रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड. सेम साउंड रिपीट होना चाहिए, सेम लेटर नहीं, तो ही एलिट्रेशन होगी. अदरवाइज वो एलिट्रेशन नहीं होगी अगर वहां पे सेम लेटर यूज हुए हैं बट दे आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड्स. अगर डिफरेंट साउंड है दैट इज नॉट एलिट्रेशन. एलिट्रेशन is the repetition of same sound. Like here we have example from the poem Bharat Desh. We shall stroll on the snow-clad silvery heights of the Himalayas. Here we have the repetition of S sound. S sound is repeated 3 times in this line, so this is alliteration. And in second word of this line, shall, here we have the sound of sh. Sh sound is there, sh sound is there, so this is not included in alliteration. Only same sound is counted in alliteration, like here stroll, snow and silvery. These 3 words will be included in alliteration, use of alliteration, but shall
will not be there in alliteration, because here we have same letter but not the same sound. सेम साउंड नहीं है इसमें शेल में, बट सेम लेटर है। बट यहाँ पे एलिट्रेशन में हमें सिर्फ सेम साउंड देखना है, सेम लेटर्स नहीं। तो यहाँ पे हम 3 वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, 3 लेटर्स को अंडरलाइन किया हुआ है जहाँ पे जिनकी साउंड सेम आ रही है इस लाइन में। स्ट्रोल स्नो, we shall stroll on the snow clad silvery heights of the Himalayas. This is an example from Bharatesh poem where the poet has used alliteration. Another example from the poem A Tree which screen, it took 10 minutes. It took 10 minutes. Here we have the repetition of same sound in adjacent words, continuous words. Took, T sound is there, 10, T sound is there, then this is the alliteration. In adjacent words. In closely connected words, we have that example which we have discussed from the poem Bharadesh, stroll, snow, silvery. These are closely connected words. So alliteration can be used in both the ways, in adjacent words or in closely connected words. किसी भी टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूस वर्ड्स में भी हो सकता है, और जैसे भारत देश पोएम में है, ये एग्जांपल है आपके सामने, ऐसे भी क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स में भी हो सकता है। Let's move to next one. Repetition is a literary device used to repeat the same words, phrases or a stanza to lay stress on something or give musical tone to the poem. तो repetition है जो, वो literary device वो use होता है repetition of same words. When we repeat same words, phrases is the group of words, line or stanza. Full stanza also can be there. The repetition of words, phrases, line or full stanza can be there to lay stress on something or give musical tone to them. उसी poem को musical tone देने के लिए ये repetition literary device use होता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम भारत देश। We shall make tools and weapons. We shall produce paper. We shall open factories and schools. We shall never be lazy or weary. Here, in all these lines, we have the repetition of one phrase, we shall. So this is the repetition of phrase because we have 2 words in each line which are repeated in each line. So this is phrase, repetition of phrase is there. This is repetition. Repetition में सेम वर्ड, सेम फ्रेज, सेम लाइन और सेम स्टेंजा रिपीट होता है। और एलिट्रेशन से इसका डिफरेंस क्या है? एलिट्रेशन में ओनली साउंड रिपीट होता है और रेपिटेशन में फुल वर्ड, फुल फ्रेज, लाइन और फुल स्टेंजा रिपीट होता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिट्रेशन repetition. In alliteration we see only sound, only repetition of sound. Here we have the repetition of words, phrases, line or full stanza. Personification. Personification is a literary device used to show the human-like qualities in a non-living thing or to represent a non-living thing as a human being. तो personification literary device है, वो यूज होता है नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग बीइंग और एज अ ह्यूमन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग को एज अ ह्यूमन बीइंग रिप्रेजेंट करना हो तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। लाइक वी हैव एग्जांपल इन द पोएम अ ट्री रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स। तो हियर वुडन फिंगर्स is used
for the branches of the trees, and this is the quality of a human being. So we are showing human like qualities in trees also. So this is the use of personification. ट्रीज के ब्रांचेस को पर्सोनिफाई किया है यहाँ पे, वुडन फिंगर्स उसके लिए वर्ड यूज किया है, रीच आउट विद देयर वुडन फिंगर्स, दिस इज personification. We are showing human like qualities, human qualities in a non living thing, that is a tree. तो ट्री में यहाँ पे ह्यूमन लाइक क्वालिटी शो कर रहे हैं, सो दिस इज द यूज ऑफ personification. Now we will discuss about the rhyme scheme of the poem Bharat Desh and our tree. First, we have the poem Bharat Desh. We have some lines from the poem Bharat Desh. We shall set up schools, all sacred temples for us, and proudly thump our shoulders and utter the name of the land of ours, Bharat. With the name of Bharat Desh on our lips, let's shake off our fears and poverty. So these are some lines from the poem Bharat Desh. The last words of each line is underlined. No rhyming word is there in all these lines, and in full poem also you can see full poem. No rhyming word is there in this full poem. So this poem does not have any regular rhyme scheme. तो इसमें कोई भी रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, रेगुलर राइम स्कीम यूज नहीं की गई इसमें, क्योंकि राइम स्कीम हम देखते हैं लास्ट वर्ड्स से कि वहां पे राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं या नहीं. तो अगर राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए हैं देन एनी रेगुलर राइम स्कीम कैन बी देयर, लाइक ए बी बी, ए बी सी बी. तो these type of rhyme schemes can be there if we have rhyming words at the end of the lines of the poem. But here we have different words, these are not the rhyming words to each other, then this poem does not have any regular rhyme scheme. So this is a blank verse. जिस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं होती, कोई भी राइम स्कीम नहीं है, यहाँ पे कोई रेगुलर राइम स्कीम नहीं है, दैट इज अ ब्लैंक वर्स, उसे ब्लैंक वर्स कहते हैं. जिस पोएम में हर एक लाइन पे डिफरेंट वर्ड आ रहा है, कोई राइमिंग वर्ड यूज नहीं किए गए, एंड राइमिंग वर्ड्स वी सी एट द एंड ऑफ द लाइंस ओनली. एंड ऑफ द लाइंस पे ही देखने हैं राइमिंग वर्ड्स, अगर यूज किए गए हैं देन द पोएम will have regular rhyme scheme, otherwise it will be a blank verse. So this poem is a blank verse, it is in the form of blank verse. Blank verse जिस poem में कोई भी regular rhyme scheme नहीं है या rhyming words है जो use नहीं किए गए. Now let's move next poem. From this poem also we have some lines on the screen. It takes so long for a tree to grow, so many years of pushing the sky, long branches stretch the arms, reach out with their wooden fingers. So these are some lines from the poem Or Tree. In these lines also we don't have any rhyming word at the end of the lines. Words are underlined at the end of each line, but these are not the rhyming words to each other. So this poem does not have any regular rhyme scheme. इस poem में भी कोई regular rhyme scheme नहीं है, because यहाँ पे भी कोई भी rhyming words use नहीं किए गए, rhyming words use नहीं हुए यहाँ पे भी, इसलिए इस poem के भी कोई भी regular rhyme scheme नहीं है. ये blank verse है, ये भी
it is a blank verse. This poem is also a blank verse. तो ये blank verse है poem और ट्री भी। तो ये दोनों poems जो हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं, इस लाइव क्लास में डिस्कस किए हैं, वो दोनों की दोनों blank verse हैं, बिकॉज किसी poem में भी rhyming words का यूज नहीं हुआ। तो both the poems are blank verse. So this was all about the literary devices, 2 poems, and the poems from the 7th standard. We have discussed in the previous live class that was based on literary devices from class 7th second term. Thanks for watching. यहाँ पे अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल 24/7 एपी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करें और साथ में आइकन दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस के, नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके और आप इजीली लाइव क्लासेस और जो वीडियोस होंगी नेक्स्ट इन फ्यूचर हम अपलोड करेंगे अपने चैनल पे, वो देख सको। तो वीडियो लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में यस, आई होप द टॉपिक इज क्लियर। And in next video we will have the live class at 1 o'clock in the afternoon, that will be of adverbs from English grammar. अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ डे। तो मिलते हैं 1 o'clock क्लास में जो कि एडवर्ब